Hey guys, my name is Shreekanth Merugu. I am the co-founder of the Percentile. In this video, I'm going to talk about the things which you should keep in mind before going for the re-examination. So there are 10 things which I'm going to list down, and it's important that you make a note of all those 10 things so that you make sure that there are no last moment, worry or last minute hurry in the examination. So the first point is to, when we go to the re-examination, make sure that you read the instructions carefully. So before starting the exam, make sure you read the instructions carefully and understand the system, like if they have changed anything or not. Because we have used to CET taking the examination, sometimes they might change. Maybe section है, sectional नहीं है. So just make sure कि एक बार read कर दो. Mostly it will be same. It won't change. But हाँ, make sure कि आप instructions read कर ले. That is the first point. सेकेंड पॉइंट इज कि सारे नेसेसरी आइटम्स आपके साथ आप लेके चलो. ब्रिंग ऑल द नेसेसरी आइटम्स विथ यू, लाइक द एडमिट कार्ड, द फोटो आईडी, राइटिंग मटेरियल. बहुत सारे लोगों ने बोला है कि पेपर नहीं दे रहे थे, रफ पेपर, पेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो मेक श्योर दैट इफ यूर अ सीरियस एस्पिरेंट तो आप आपके साथ रफ पेपर, एंड आईडी कार्ड, जो भी रिक्वायरमेंट है, एडमिट कार्ड, पेन, पेपर, सब लेके जाओ. एंड वहां पे जाके आप यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट. The third point is, when you start the examination, make sure that you focus on your strengths. So why I'm saying this is because firstly you have to identify what are your strengths while giving the mock test and while practicing. आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस कौन से questions में ज़्यादा अच्छा perform करते हो. So I generally tend to tell this to a lot of my students also कि जैसे आप क्रिकेट देखते हो या फिर कोई फुटबॉल मैच देखो या जो भी है, जो ओपनिंग जिसका ज्यादा अच्छा होता है ना, उसका फिनिशिंग भी बेटर होता है. इज व्हाट आई बिलीव. सो इफ यू स्टार्ट विद द टॉपिक्स विच यू आर गुड एट, विच यू आर very good at, where you score more, you will tend to have that confidence in the first half an hour. So for example, if I am very bad at puzzles और मैंने स्टार्ट ही पजल से किया, तो आई एम टेंड टू स्टार्टिंग एट अ वेरी बैड स्टेज बिकॉज मेरे को पजल्स आता नहीं है. आई एम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड इन इट, एंड मैंने उसी से स्टार्ट किया, तो मेरा स्टार्टिंग भी स्लो हो जाएगा. एंड आई माइट गिव अ लॉट ऑफ टाइम मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड. बट अगर मुझे डीआई बहुत अच्छे से आता है तो आई कैन स्टार्ट विद डीआई. So I'll just scan through the paper for the first 5 minutes or so, and or else second, third या फिर 10th, 15th, 30th क्वेश्चन में मुझे कोई डीआई मिल गया तो I'll start from there. And first वाले क्वेश्चंस अगर पजल्स है तो I'll mark it for review and come back later. So that is also an important point, to focus on your strengths. The fourth point is to stay hydrated. This is a really important point because we are sitting for 2.5 hours. तो 2.5 hours के लिए जब आप बैठते हो तो कभी कभी आपका फोकस नहीं रहता है 24, मतलब पूरा टाइम एग्जाम के ऊपर. सो आप थोड़ा मिस आउट कर जाते हो क्वेश्चंस पे या सिली मिस्टेक्स होना स्टार्ट होता है. तो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, टेक अ सिप ऑफ वाटर. मेक श्योर यू क्लोज योर आईज, यू डोंट फोकस ऑन द स्क्रीन फॉर ऑल द 2.5 hours. थोड़ा बाहर देखो, just for 10 seconds or 5 seconds, take breaks, and that will really help you. It helped me during my examination, and I hope it helps you as well. Third thing is to, oh sorry, fifth thing is to stay relaxed. Do some relaxation exercise, like breathing exercise before starting the examination, and it actually helps. So the most important part during the CET exam is to, your mental capacity should be at its highest, and you should be 100% focused on the task ahead. And for that, if you do some breathing exercise, right, so you will be in that phase कि हाँ, आपको एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आएंगे. आप विदाउट थॉटलेस होके आप 30 seconds मेडिटेशन करो. इट रियली हेल्प्स. तो फिफ्थ थिंग इज टू स्टे रिलैक्स. Sixth thing is to avoid last minute studying, and and make sure that you revise as well. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि just 2 days before the exam आप बहुत कुछ प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, या 1 day before the exam you start preparing a lot. You कोई टॉपिक रह गया तो उसका पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. दिस इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज लास्ट मिनट में अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आपके एंजाइटी लेवल्स इंक्रीज होते हैं. आपको लगेगा कि इसी टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है. Whereas that is not true. That might not be true. So last moment कोई चीज पढ़ने के लिए मत रखो, बट जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है उसको 100% रिवाइज करना, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो पूरे एग्जाम में मेक श्योर करने की एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज नहीं करना है. यू हैव टू स्टे रिलैक्स एंड यू हैव टू अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग ऑफ ऑल द न्यू टॉपिक्स एक्सेट्रा, एंड मेक श्योर यू रिवाइज.
seventh point which I'd like to say is to read the questions carefully. So in this exam only 2023 CET एग्जाम में slot 3 में एक ऐसा DI सेट आया था जिसका ग्राफ कैट 2021 और समथिंग कोई कैट के पेपर का DI जैसा था, बट उसके क्वेश्चंस कंप्लीटली डिफरेंट थे और बहुत ही ज्यादा इजी थे. यू कुड हैव सॉल्व दैट डीआई इन लेट्स से 3 or 5 minutes. 3 क्वेश्चंस के थे, 3 मिनट्स में सॉल्व हो सकते थे. बट सिंस बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वो ग्राफ देखा और उन्होंने कैट का एग्जाम भी दिया हुआ था, तो उनको लगा कि यार ये तो कैट लेवल का डीआई है, ये तो हमसे सॉल्व नहीं होगा, एंड दे लेफ्ट इट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली. एंड बहुत सारे टाइम क्या होता है डीआई में भी बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स देके हमको लगता है कि यार ये तो काफी डिफिकल्ट डीआई होगा. बट ट्रस्ट मी, आफ्टर यू रीड द क्वेश्चंस, राइट, डीआई के 5 क्वेश्चंस रीड कर लिए, ऐसे एक उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो काफी इजी है, जिसके लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. लाइक आप 2-3 कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट करके भी सॉल्व कर सकते हो. तो दैट्स वाई. एंड 101% मॉक एनालिसिस में आपने ऐसा रियलाइज किया ही होगा कि आपने कोई क्वेश्चन पूरा रीड ही नहीं किया, और अगर रीड कर लिया होता तो वो इजिली सॉल्व हो गया होता. So that's why seventh point is to read the questions carefully, read each and every questions carefully. And it's important to stay calm to read the questions carefully, right? Eighth point is to be prepared for any kind of surprises. So we know that कुछ भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन गलत आ गया या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, कोई टॉपिक में था ही नहीं, लॉग्स वगैरह एक्सेट्रा, कुछ तो रैंडम क्वेश्चन आ गया, राइट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का. बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट ऐसा एकदम अनएक्सपेक्टेड नहीं था या फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इफ अगर इवन इफ कोई सरप्राइज क्वेश्चन आता है तो हार्डली 5 के ऊपर या 10 के ऊपर तो होगा नहीं. तो यू मेक श्योर दैट कि आप उसको अच्छे से डील करोगे. एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं. यू जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, लीव आउट द parts which you are not prepared for. Make sure you focus on the things which you are prepared for. So be prepared for surprises. We know CET can throw in some kind of surprise at even in re-examination. Ninth point is to stay composed during technical glitches. So it's a very important point because a lot of people have gone through technical glitches in the 4 slots which I've already conducted, and they have tried to make sure that कि लोगों को जितना टाइम अलॉट किया है उतना पूरा टाइम मिले. तो इनकेस आपके साथ भी टेक्निकल ग्लिचेस होता है, सो डोंट वरी, जस्ट मेक श्योर आप नोट कर लो कि आपका कितना टाइम था जिसमें आपका रुक गया है. एंड उसके बाद में जो आपको दूसरा कंप्यूटर देते हैं या शिफ्ट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करके देंगे, तो वही टाइम से स्टार्ट होगा. तो जैसे ही कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, राइट, यूज इट टू योर एडवांटेज. आपको एक ब्रेक मिल गया, लेट्स से 3-4 मिनट्स का. टेक डीप ब्रेथ्स. जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वो क्वेश्चन पे ध्यान दो, वो क्वेश्चन फिनिश कर लो. अब वापस टेक्निकल से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो यू हैव सेव्ड 3-4 मिनट्स रादर देन लूजिंग 3-4 मिनट्स. सो थिंक ऑफ इट इन दिस वे. ऑब्वियसली टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होना चाहिए. आई एम नॉट प्रमोटिंग एंड सेइंग दैट कि टेक्निकल ग्लिचेस अच्छे होते हैं. इट ऑब्वियसली हैज सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि अगर ऐसा नेगेटिव थिंग भी होता है, टू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग पॉजिटिव, because that's how you are going to make sure that you are on your front foot at all the time during the examination. So stay composed during technical glitches. You are allotted 150 minutes and you will be given 150 minutes. That is something which no one can take away from you. पर अगर कोई glitch हो जाता है, try to use it to your advantage. वो break में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो आप नॉर्मल टाइम पे सॉल्व कर सकते हो, राइट. And then the last and the most important thing is to stay calm during difficult questions, right? बहुत सारे टाइम क्या होता है कि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग को ऐसा ईगो पे आ जाता है. आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ टॉपर्स आर स्कोरिंग मोर, एंड because JBIMS में there are only 40 open category seats, right? So you have everything on your line. But try to understand that इन सीईटी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट क्वेश्चन करने या इजी क्वेश्चन करने से दोनों में आपको मार्क्स तो एक ही आने वाला है, राइट. सो योर फोकस इज टू क्विकली सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, एंड नॉट कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो, इजी क्वेश्चन कम कर रहे हो, राइट. सो स्टे काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आपको डिसीजन मेकिंग वहीं पे करना है, किसको छोड़ना है, मार्क पर रिव्यू करना है, ऑप्शन सी मार्क करके आगे जाना है, या यू नो you just leave it and focus on easier questions. So these are the 10 different things which I think you should keep in your mind before going for the re-examination.
All the best for everyone who is attempting re-examination. Stay focused on the examination. Don't think about anything else until the day of the examination, and then we can discuss about the things later. All the best. See you in the next video.